alaikum to all my lovely viewers watching Lazeez Cuisine. I hope this is the show by now that you enjoy at your houses, and I also hope that you're having good time with your families and enjoying the Ramadan's festivities with all the amazing and yummy recipes that I have been sharing with you so far. And today too, another one of the delicious recipes is gonna be very easy and nifty. Normally, होता ये है कि जब भी we have guests over, let's say क्योंकि Ramzan is a time where people come together, they eat together, they feast together. So it's a time where people just get close and eat food and enjoy. And of course, ibadats and everything is also going on with us. And so what I want to do today, especially today, is that let's prepare a recipe that comes together really quickly so you have time to spend with your guests basically. So मैं नॉर्मली ये करती हूँ कि एक तरह से ये स्टाइल है मेरा कुकिंग सिखाने का भी कि सब तरह की चीज़ों का प्रेशर आप लोग अपने ऊपर ना लें और कुछ चीज़ें आप लोग मार्केट से प्रोक्योर करके और उसको अच्छे से अगर गार्निश करके और प्लेट आउट करके और उसको एक किसी नए तरह के डिज़र्ट में बना के सर्व करें, व्हाई नॉट। सो एक तो हमारा मेजर बहुत बड़ा जो होता है डिज़र्ट फॉर रमदान, आफ्टर रमदान फॉर ईद इज़ शीर खुरमा 100%. It's a crowd pleaser. Everybody loves sheer khurma. There are no two ways about it. But another one, since it's gonna be a big spread this Eid, every Eid, you put out your food, try to host people at home. So you should have other desserts options too, right? So what you do is prepare some desserts at home, others you procure from outside, and then just plate them out nicely. So one of these desserts is going to be this summer trifle. We are making summer trifle today. So normally जब भी आप किचन में काम करें तो प्लीज़ कोशिश ये किया करें कि बच्चों को भी उस एक्टिविटी में किचन में इन्वॉल्व करें. It's important to involve kids in the kitchen early on so that they learn strongest virtues in their life, that's patience. And I think कि किचन में काम करना बच्चों के लिए एक तरह का वो आर्ट फील्ड है जो अगर कोई और तरह का arts and crafts they are not doing in life, they can still come in the kitchens, help the mothers, and make fun time out of it. So we are going to be making summer trifle today. Let's get started. What you have to do, you have to start off with your custard powder, the regular packet custards that are in the market. You have to follow the instructions on your packaging basically. The ones that you get from the market, you need to follow those. All right, so I'm going to take 2 tablespoons of custard powder here. This measurement, this spoon is not exactly a tablespoon, so a little bit more. All right, and I'm going to dilute this with a little bit of milk. Meanwhile, we will get started off with this. I'm just gonna add some milk first here and then bring it to my stove. I have kind of eyeballed milk and the custard powder here. You, however, can follow packet instructions on your packaging. Let's drop in roughly 4 spoons of sugar. Meanwhile, let's crumble up some cake here. Okay, so for the cake too, let's say if you have time and capacity in your houses to prepare a pound cake, a plain cake, you can. But if you don't have and you have a lot of things going on, so what you can do is get a store-bought pound cake and just crumble it up and then layer it onto your dessert. We will, meanwhile, keep an eye on the milk too. Is it simmering? Kind of. All right, we just need to crumble this guy up.
We would love to hear your feedbacks on ikra.tv. Do drop your feedbacks over there. And also you can drop in your requests and suggestions too. Let's check out milk here. Since strawberries are in the season right now, is the fruit that I'm using. There are other fruits too here in the season. So what you can do is switch it up. Whatever fruit that is available in the season, you could totally go with that fruit. Acha, so one of the very important tips while making custard is to stir continuously, so you don't end up with lumps that you can't deal with later on. So what you want to do is, रमज़ान में आप लोग बच्चों को अच्छी बातें सिखा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम होता है. दिन उस तरह से नॉट रियली दिन बट लाइक वर्किंग आवर्स काइंड ऑफ इजी होते हैं, और मे बी अगर बच्चों को स्कूल से कम आवर्स के लिए अटेंड करना पड़ता है, आपके साथ ज़्यादातर घर पे होते हैं, उनकी इस्लामिक ट्रेनिंग आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से. उनके साथ आप लोग इस्लामिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, नमाज़ें वगैरह अर्ली ऑन. अगर आप बच्चों को उस तरह से तालीमात दें जिसके थ्रू टर्न आउट टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड responsible adults for the society, I think that is kind of important for parents to observe and for the kids to get that kind of training. And keep close eyes on your kids' activities, as in monitoring them in the houses, of course. But let's say if they are outside too, so if their upbringing from their houses is, you know, it's patterned and it's on a line of direction that should lead them somewhere, they will listen to what you say. Because at times अक्सर ऐसा होता है कि अगर माओ को ऐसा लगता है कि गौर से नहीं बच्चे सुन रहे हैं, नहीं वो तवज्जो दे रहे होते, बट जब वक्त पड़ता है तो वो ही अम्मी की अब्बू की बोली हुई बात याद आ रही होती है. ये मेरे साथ भी होता है कि जैसे होता है ना, कभी आप किसी चीज़ में अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है या हाउ टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट हैपेंस विद मी इज़ आई कीप गेटिंग माय मॉम्स वॉइस इन माय हेड, एंड it's mostly my resolution towards things, how to deal with a particular situation. We are going for a break and I will see you after it. I will, however, put my custard mixture in the milk and make it into a custard. See you. Welcome back, you guys. I hope you have been watching this show with all of your heart and interest. Please do let us know of your feedback on ikra.tv, and any suggestions and requests will be entertained as well. मेरे पास यहाँ पे कंटेनर, let's say आप एक उसकी वो भी बना सकते हैं, यानी इंडिविजुअल सर्विंग्स भी हो सकती हैं इसकी, या इसकी आप फैमिली साइज़ बड़ी सर्विंग भी बना सकते हैं. ठीक है, पहले तो केक क्रम्बल कर लिया, और केक क्रम्बल करके उसकी लेयर आप डाल सकते हैं बीच, जो भी आपका सर्विंग प्लेटर है, इंडिविजुअल और फैमिली साइज़. बेस में लेयर्स का बेसिकली फ़ायदा उस वक्त होता है कि जब आपकी कोई भी डिश, जो सर्विंग डिश है, वो एक तो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास की हो, ताकि आपको बाहर से उसकी लेयर्स नज़र आएँ. दैट्स गोना कीप योर डिज़र्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग टू, यानी देखने में भी अच्छा लग रहा होता है. फिर खाने में अच्छा होना उसकी दूसरी शर्त है, पहले देखने में अच्छा होना चाहिए. इसको ना लेयर करके और व्हिप क्रीम के अंदर कस्टर्ड को फोल्ड करके, और उसकी एक लेयर डलेगी इसके ऊपर. फिर हम सिंस स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ करें तो स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं.
अगर आप इसमें whipped cream ऐड करेंगे तो वो आपका इसका जो existing texture है, it's kind of dense right now. So with the whipping cream, it's gonna make it very light and creamy, which is a flavor quality to a dessert that is light to eat. अगर कोई मीठा already kind of हैवी होता है उस तरह से कंज्यूम करने के लिए, तो अगर मीठा एक तो है ही हैवी, उस ऊपर से अगर वो टेक्सचर वाइज भी बहुत गाढ़ा और बहुत वो होता है ना, तो नहीं भी इतना इंटरेस्ट कर रहा होता. सो इफ़ यू वांट टू कीप योर डिज़र्ट लाइट एंड delicious at the same time, you can introduce a little bit of whipped cream to it so as to achieve the texture that you're looking for. I'm just gonna add a generous layer of custard in these 2 individual shots. Proper walls पे strawberries लगा के, और वो बहुत प्यारी फिर लगती हैं, वो भी try कर सकते हैं. So like बहुत तरह की serving styles हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं. All right. एक तरह के डिज़र्ट में कई तरह के फ्लेवर्स और टेक्सचर्स कीप इट इंटरेस्टिंग. सो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ पाउंड केक इन द बेस एंड देन वी डिड लेयर इट विद dairy deliciousness and then also a fresh fruit of choice. This is a banana custard. If you want to go ahead and layer it up with bananas, you could do that too. Would be an indication of what custard you're using. Otherwise, if you want to keep it vanilla based, you can then use a vanilla flavored. अच्छा जी, हमने क्या करना है कि आपने लेना है whipped cream ठंडा हो, whipping cream, और उसको हाथ से बेशक लाइटली whisk कर लें. अगर आप whipped cream को ठंडा नहीं लेंगे तो वो अच्छे से whisk नहीं होगी, और जो आप टेक्सचर चाह रहे हैं उससे अचीव करना वो नहीं हो पाएगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप योर whipping cream in the fridges, in the chillers at all times first of all, or at least 6 to 8 hours before you use them. इसके अंदर ये रिमाइंडर कस्टर्ड फोल्ड कर देते हैं ताकि यूटिलाइज हो जाए. I personally like silicone spatulas. They work great. अच्छे से आपका apparatus भी clean हो जाता है, और while washing you wouldn't have a hard time to clean your containers. सारा इसको यहाँ से हटा देते हैं. Let's just bring this together. Let's start so in the start of the episode I told you to use either strawberry jelly or jam.
डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज़ अवेलेबल टू यू, उसको हल्का सा जैसे फेंटते हैं ना हम, बीट करते हैं, उसको बीट कर लें। चलो जी, I'm gonna keep it here only. I'll bring the cake crumbs here. Let's start layering. पहली लेयर हमेशा केक से स्टार्ट करें ताकि आपकी सर्विंग नीट हो। अगर बेस में क्रीम होगा ना तो वो अच्छे से वो बनेगा नहीं, स्कूप। Alright, just start off. Good amount of cake layer in the base. And then एक तो केक की हो गई है लेयर, इसके बाद आपने ये जो clean layers while making a dessert, you need to observe how you layer. It has to be clean. Like smooth it out nicely. Trying to adding another layer of strawberry jelly to the side. अगर आपके पास jelly नहीं है, you have strawberry sauce, you can go in with that too. Alright, I'll just bring the layers closer to the edge because that's where you see them nicely. Finish it up with my cake crumble. चलो जी, this is done.
Two way of serving the summer trifle given with any type of fruit that you want to do at home. Not just summer, make it spring, make it winter, however you like it, you can consume it whenever you want. Just make it ahead of time. Alright you guys, I hope you enjoyed today's episode as I did enjoy while making these recipes for you. I am going to come tomorrow with more scrumptious recipes bringing your way to make your Ramadan more delicious and fun in the kitchen with your family and your little ones. Do not forget to give us your feedback at ikra.tv and stay blessed. See you. Take care.